ओके, सो है वी वर डिस्कसिंग अबाउट कोट ऑफ द डे। तो आई वाज सेइंग कि जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, सो देन आल्सो इनिशियली कंसर्न्स ये थे कि आर वी बेसिकली मूविंग टुवर्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बट ऐसा नहीं है। दैट इज अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रॉम बीइंग एस्टैब्लिशिंग इट एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो once we have sufficient amount of domestic capabilities, we are self reliant, तो हम उसको एक्सपोर्ट के फॉर्म में भी और प्रमोट कर सकते हैं। so that is for strengthening our economic growth as well. So in that context, we can also say that India is not an inward leaning power, and definitely. Basically, we are trying to say that self-reliance does not mean that we are cutting out from the outside world. We Yes. will promote all the things that we are supposed to do, but it is very important for ourselves to become a self-reliant country. Therefore, we are not an inward-leaning power. We are basically outward-leaning power. कि we promote, for example, PLI हो गया या फिर मेक इन इंडिया हो गया, जब आपने बात की जैसे, तो और इवन हाँ रेजिलेंस में हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की भी जब बात करते तभी जाके हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में जुड़े हुए हम लोग ना जाकर। हाँ वो सब है, वो स्टिल हाँ मतलब इंडिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हम अपने टाइज भी स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, तो रेजिलेंस पे भी हम फोकस कर रहे हैं, एंड सेल्फ रिलायंस पे भी फोकस कर रहे हैं, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पे भी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन सकते हैं, ग्लोबल पावर कैसे बन सकते हैं, रीजनल पावर कैसे बन सकते हैं, सो उस पे हम फोकस करें। सो दिस इज नो वेयर इंडिकेटिंग कि वी आर एन मूविंग टूवर्ड्स एन इनवर्ड लीनिंग पावर, या हम ज्यादा अगेन वी आर मूविंग बैक टू द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। सो ऐसा कुछ नहीं है एज ऑफ नाउ। Okay, coming to Financial Express newspaper. So Pravesh, you can start with it. प्रवेश नहीं है, Okay, Pravesh ने join नहीं किया है। विकेट टू। हाँ, we can continue. So we are also having children-oriented mutual funds. So again, this is important from the perspective of financial planning for the children. Basically, I think uh, this is with respect to children. I think SBI mutual the fund. account will be in the name of the children, right? हाँ, वो तो हो गई। मतलब चिल्ड्रन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर्स के पर्सपेक्टिव से, कि कौन से टेक्नोलॉजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनीज रहेगी। एजुकेशनल के पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इवन लाइक चिल्ड्रन के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये है। आई डोंट थिंक सो कि इट वुड बी ऑन द नेम ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि अगेन चाइल्ड वुड बी बिलो 18 ईयर्स, सो डीमैट अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते हो। सो पेरेंट्स कैन इन्वेस्ट, बट दिस वुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड। And जो SBI म्यूचुअल फंड है, they're also undertaking investor education and awareness. तो ये बहुत important aspect है आज के टाइम में, when we're seeing even the youth getting influenced by the capital markets, and they feel कि if they enter into the stock market तो short term में they can get rich. However, that is not the case. So even regarding awareness around the know your customer regulations, so all of that would be again a part of this. Okay, so this is basically stock market performance during Diwali. So rupees 3.27 trillion Diwali bonus for the investors. Cooling US inflation lifts the indices. So 10-year yield that also falling. This is a good sign. Talked about exports have risen. This is on the low base because of the low base effect. So again, actually, when we are talking so much about exports increase हो गए, so that is not actually उतने level से नहीं increase हुए, because low base में अगर smaller amount of increase भी देखने को मिलता है, तो it tends to come, जो figure हम calculate करते हैं, तो it tends to be a great figure. जैसे इस केस में हमें देखने को मिला 6% increase हुए, but actual sense में या real sense में अगर आप बात करो in terms of volume, but वो इतना increase नहीं हुए. So this we've already discussed low base and high base effect. So non-banking financial companies, they are
basically involved in digital lending also. Basically, we are seeing कि यहाँ पे RBI has taken action against 2 Bajaj finance products. So Ecom and Insta EMI card जो वो issue कर रहे थे because they have been found violating the digital lending norms. So they failed to issue key fact statements to the borrowers under these 2 lending products, and there were basically deficiencies were found in the key fact statements जो पहले भी issue किए गए थे, तो उसमें भी basically they were found manipulated. So for financial stability, the executive board of the IMF has proposed to the board of governors that a 50% quota increase should be allocated to the members in proportion to their current quotas, and this can play a pivotal role in safeguarding global financial stability. So basically reforms in IMF, even जो हम quota revision norms की बात करते हैं तो. So this has been one of the suggestions, अभी propose ही किया गया है ये चीज. So this year, current financial year में हमारा fiscal deficit target is 5.9%, and we are like right on track, off track नहीं है कि we might be exceeding beyond 5.9%. So revenue position is still comfortable जो हम revenue expenditure कर रहे हैं. That is still rationalized form में we have been undertaking that. And growth concerns की बात करें तो analysts have expressed concern कि जो हमारी nominal GDP growth है it might slump to around 9% due to negative wholesale prices inflation till October. So basically यहाँ पे भी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और हमने बात करी होलसेल प्राइसेस में फॉल होने की वजह से हमारी जीडीपी फॉल होगी. सो औशिक आप इसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हो ये जो दो लिंकेज है इन दोनों चीज के बीच में? जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी हाँ नॉर्मल जीडीपी और टैक्स. नहीं टैक्स नहीं, प्राइसेस हम बोल रहे हैं ना, नेगेटिव होलसेल प्राइसेस की वजह से हमारी नॉमिनल जीडीपी 9% तक आ सकती है, मतलब फॉल होगा कंपैरेटिवली 9% तक. पहले हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बट अब 9% फॉल, मतलब 9% पे रिकॉर्ड हो सकती है नॉमिनल जीडीपी. तो ये क्यों, आप मतलब बोलो मुझसे. ठीक है, मतलब यहाँ बेसिक जो डिफरेंस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी रहता है, रियल जीडीपी में हम नॉमिनल से इन्फ्लेशन माइनस करके हम कैलकुलेट करते हैं. तो रियल सेंस में अगर आपको एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट करनी है तो वो रियल जीडीपी हमें बताती है कि वॉल्यूम टर्म्स में कितना ग्रोथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. नॉमिनल जीडीपी में अगर प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशंस होंगी बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, सो दैट इज वाई नॉमिनल जीडीपी के फिगर्स और नंबर्स में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो सिंस होलसेल प्राइसेस में डीफ्लेशन हो रही है, मतलब नेगेटिव, कल भी हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन डीफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन. सो बिकॉज प्राइसेस आर गोइंग इन द नेगेटिव टेरिटरी, दे आर फॉलिंग, एंड उसकी वजह से हमें नॉमिनल जीडीपी में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर का कितना, इट वाज अबाउट 49% द फुल ईयर टारगेट ऑफ ₹10 ट्रिलियन इन फर्स्ट हाफ. And direct tax collections में we expect to cross the budget goal जो हमारा budget goal था. So this is again a positive indication कि direct tax collection it signifies more formalization of the economy, or we can also look into, उसमें थोड़ा हमें detail में देखना पड़ेगा कि whether tax base it is expanding or not. So it can be because of these two major factors कि we might expect direct tax collections going up. So here we see key income have been restored to the pre-pandemic levels in financial year 23. So after the slump due to COVID-19, per capita जो net state GDP था, it has recovered in 2021-22. So inflation adjusted basis की अगर हम बात करें, so the rise has been rather slow. So मतलब again वही real sense में recovery it has been slow compared to nominal terms. So यहाँ पे again it can be misleading क्योंकि
it is being saying कि per capita net state GDP और इसी टाइम पीरियड के दौरान इन्फ्लेशन भी हाई लेवल पे रही है, तो इट कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हम बोल रहे हैं कि इनकम लेवल हैव बीन रीस्टोर्ड, बट एक्चुअल सेंस में सिंस यहाँ मेंशन भी है इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पे अगर हम देखें तो दी राइज हैज बीन रादर स्लोअर। एंड इंडियाज पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइसेस, सो हमारा जो बेस ईयर है 2011-12 है, सो प्राइसेस इंक्रीज हुए बाय 35%। सो कैन सी कि yes, मेजरली प्राइसेस की वजह से जो मैनिपुलेशन जो फिगर्स आती है ना, एक्चुअली वो हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई या वी हैव रिकवर्ड बैक अगेन, बट वो नहीं होता उतना अमाउंट से। ये हमने कल बात करी थी पल्सेस इन्फ्लेशन। ये भी ले लिया था। हाँ FT के डिफरेंस क्या है? हाँ, दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड, ये भी हम ले चुके हैं ओटीटी क्रैक तो ले चुके हैं, कंटेंट। IPF ले चुके हैं, इंडियन पैसिफिक फ्रेमवर्क प्रोस्पेक्ट। ये हो गया है। देन कल हमने बात करी थी आईपी ऑफ आयरेडा, ये एक इंडियन अरे रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। सो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज में भी इट इज वर्किंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक बैटरी स्टोरेज, फ्यूल सेल्स, पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो, green hydrogen, all of these in these sectors, also renewable energy maybe it is working। and credit rating जो ट्रिपल ए है, जो हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है which is considered to be the most stable, so this is rated at triple A। So automakers are confident of meeting the emission norms, so it is very important क्योंकि vehicular emissions सबसे बड़ा factor रहते हैं behind air pollution। And Maruti shows better fuel efficiency partly on the hybrid introduction, we are also introducing the ethanol blended fuel जो भी right now 10% it is blended with the petrol। apart from this emission norms में और automobile sector में electric vehicles are a part of it, but again electric vehicles की manufacturing में जो emissions जाते हैं they are also an important aspect। so cafe 2 जो है corporate average fuel economy norms are there, and Bureau of Energy Efficiency institution level पर अगर हम बात करें, so it looks into this, it has convened a meeting also with the automobile manufacturers to discuss offsetting the regulatory obligations। then we also talked about, we have recently introduced the Bharat Stage 6 norms, उसमें भी fuel efficiency की हम बात करते हैं, and reduced sulfur emissions there, this is mentioned here, BS6 emission norms। so carbon footprint is relatively less here in this stage। so Bureau of Energy Efficiency आता है under the Ministry of Power। yes, Okay, Narayan Murthy sir, he says he's a co-founder of Infosys कि India must spend $1 billion a year to train the teachers। So under the National Education Policy 2020, you've been suggested this thing, $1 billion annually for 20 years to train the teachers to accelerate basically the quality of education। So this is one suggestion। So training of teachers बहुत important है। We talked about even technologically भी they need to be aware about the technological know-how, and their skills should match with the skilled jobs that are being demanded in the market। So if that would be on the same platform, that would be on the same page, तो वो actually students को भी real sense में help करेगा। yes, और इस कॉन्टेक्स्ट में देन हायर एजुकेशन में हम स्टेम के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर चुके हैं, दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एंड इवन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्टेम सेक्टर, इट्स इम्पोर्टेंट। ट्रेन द टीचर कॉलेजेस, okay, colleges भी सेटअप करना important for training the teachers, this is what he has been suggesting, but again separate colleges, then again उनकी sustainability, उनकी relevance for a particular time period, मतलब आप एक बार training provide कर दोगे या even periodically भी जो training provide करनी पड़ेगी, तो do we really require separate colleges for training the teachers? I don't think so। औशिक आप इस पे क्या बोलोगे?
He's suggesting 2500 train the teacher colleges होने चाहिए सर. इट इज कॉस्टली, ये बोल सकते हैं. हाँ, कॉस्ट इंटेंसिव है एंड वो स्ट्रक्चर भी आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स यूज करेगा, मतलब दिस कांट बी लाइक गोइंग ऑन. ट्रेनिंग आप सालों सालों तक नहीं प्रोवाइड कर सकते अकॉर्डिंग टू मी लाइक. और तो इंडिविजुअल ऑलरेडी ट्रेनिंग हाँ अपस्किलिंग और वो सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. क्या कह रहे थे दिव्या आप? बीएड वगैरह होती है जिसमें कराए जाते हैं, तो उनको और बेटर किया जा सकता है. उसमें तो टीचर्स की ट्रेनिंग ही होती है, 2 साल के लिए होती है. जैसे 2 इयर्स के लिए पर्टिकुलर कोर्स कि टीचर बनना है तो आपको स्पेसिफिकली करना पड़ेगा, तो उनको और बेटर किया जा सकता है. हाँ उस लेवल पे हम और बेटर कर सकते हैं. आई थिंक वी कैन टेक अप हिंदी न्यूज़पेपर. हाँ जी. Okay, Ashik, we can start with that. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देखा जा सकता है कि इसमें से किस किस चीज के लिए राशि दी जाती है. इनमें इन्होंने कहा है कि जिनमें एक्सीडेंट हुआ उनको 50,000 रुपए इस कोष से निकाल के दिए जाएंगे. हाँ. ठीक है. रिलीफ फंड. जैसे मोहम्मद अभी डिस्कस किया था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें टेररिज्म में ज्यादा कर लिया जाता है कि उन इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलते हैं, तो उनमें उनके साथ साथ ऑडियो क्लिप्स का, वीडियोस का, इन सब की हेल्प से उनको इन गतिविधियों को दिया जाता है कि स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो इन चीजों के अंदर. अब अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन था, उसके साथ साथ ये चीजें भी जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिला. ये भी हम बात कर चुके हैं. सीबीडी डिस्कस सीबीडीटी. कर चुके हैं. बस ये देख सकते हैं कि 2021 से अगर 23 तक में डिफरेंस देखे तो स्टार्टिंग में 322 करोड़ था, 23 में 1,021 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं. तो हम्म. डिफरेंस बढ़ गया. हाँ तो इसका मतलब कि ये चीजें और बढ़ रही हैं, तो बेसिकली ब्लैक मनी हम बोल सकते हैं और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और ज्यादा इंक्रीज हो रही है. ये हमने ले लिया है, मतलब पैराग्लाइडिंग प्री विश्व कप दिल्ली में, उत्तराखंड में ये होस्ट हो रहा है. एंड बेसिकली एयर स्पोर्ट्स की मैं बात कर रही थी कि पैराग्लाइडिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट. हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं. सो इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वी आर लाइक हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंट्स, हम आगे लेके जा रहे हैं उसको नेशनल लेवल पे. हम्म. टेक की सेवा परियोजना देखी जा सकती है, हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है. इसके तहत बकराटी बकाल्टी नामक गांव में ये लगाई गई, जहां पर मक्के और गेहूं की खेती की जाती थी रिपीटेडली. तो उसको कम करने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर फलों की खेती स्टार्ट की गई है, जिसमें मौसमी के साथ साथ जो जगह बचती है उनके बीच में लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी वगैरह की खेती भी की जा सकती है, जिससे जो इनकम है वो बढ़ेगी. और साथ साथ एक तरह की जो सिर्फ गेहूं और मक्के की खेती की जा सकती है उसमें चेंजेस आएंगे. हम्म. हाँ हॉर्टिकल्चर मिशन हिली स्टेट्स में बात कर चुके हैं इस पे भी. ओके. कल्प मेधा में धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है, किसी भी धर्म या व्यक्ति को राष्ट्र की असीमता से खेलने नहीं दिया जाना चाहिए. सर अब्दुल कलाम सर का ये कोट है. बेसिकली यहाँ जो धर्म का कॉन्सेप्ट है वो रिलीजन है. हम्म. असली में धर्म डिफरेंट होता है रिलीजन से. हिंदी में क्या कर सकते हैं, अब वही दिखाता है हमेशा. इस हिसाब से यहाँ भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष है तो उसकी प्रतिबिंबता भी होनी चाहिए.
हो चुका शायद ये 19 मानसी, वी कैन टेक अप द साइंस एंड टेक पेपर वाला जो हिंदू में था, कौन सा था साइंस एंड टेक वाला? लास्ट में लिया था आपने, रे चौधरी, द फिजिसिस्ट हु क्वाइटली डिफाइड द सिस्टम। नहीं, 1 मिनट करती हूँ फिर से शेयर। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता ओके, तुम कर दो। हूँ, फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा, फिर ठीक आप है। कर दो। हम्म। आप दो मिनट। परमिशन। हम्म। नो कमेंट टू द हिंदू न्यूज़पेपर। मैं बेसिक से आसान भाषा में समझाता हूँ कि राय चौधरी बेसिकली ही वॉज फ्रॉम द एरा ऑफ रामानुजा और मेघनाथ शाह, 1920s के समय के थे, जिस समय जो वर्ल्ड ओवर है वहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा था उस समय थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का, और आइंस्टाइन का जो एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो एक गेन कर रहा था प्रोमिनेंस। तो इन्होंने बेसिकली ब्रेक डाउन किया थ्योरी को, और ही एंडेड अप राइटिंग अ वेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट पेपर ऑफ जेंडर रिलेटिविटी। जेंडर रिलेटिविटी होता है मतलब कि वर्ल्ड में जो जो यूनिवर्स है वो बेसिकली एक लाइट का भी स्थित स्ट्रेट मार्ग नहीं होता है, लाइट ऑल्सो बेंड्स ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटी। तो जेंडर रिलेटिव इट इज ऑलवेज इन रिलेटिव फॉर्म, कोई परफेक्ट कांस्टेंट नहीं है। तो इस पर ही उन्होंने लिखा था पेपर। तो वो बेसिकली दे ही वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस। मानसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर में जो हमारे साइंटिस्ट थे वो चाहते थे कि हमारा भी जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और साइंस के डेवलपमेंट के क्षेत्र में अवेयरनेस बढ़े, इसके कारण उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको। ठीक है। और उसके बाद फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेवलप किया जेंडर रिलेटिविटी थ्योरी 1960 में। उस समय फेमस हो रहा था वर्ल्ड वाइड, जहाँ बात हो रहा था कि ग्रेविटी कुड बिकम इन्फाइनेटली स्ट्रॉन्ग एंड स्पेस टाइम कैन बिकम इन्फाइनेटली कर्व्ड। तो स्पेस और टाइम कर्व्ड हो सकता है, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटी। तो हम्म। उन्होंने बेसिकली यूज किया, एक एग्जांपल लिया कि जैसे नॉर्थ पोल जो शिप है, दोनों शिप अगर अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ेगा, दोनों को लगेगा कि मैं स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली दोनों को नॉर्थ पोल में मिलेंगे। तो कर्व होता है ना एक तरह से, तो हाँ। वैसे ही एक फीलिंग होता है। तो रिलेटिव है, आप बाहर से देख रहे हो तो आपको लगेगा कर्व है, लेकिन अंदर में आप जब खड़े हो तो आपको लगता है स्ट्रेट लाइन है। वेट है। तो ये रिलेटिव है। तो इसी पे बात उन्होंने लिखा था, ओवरऑल यही है अगर देखा जाए तो। अमर राय कुमार राय चौधरी। अमल कुमार रायचौधरी, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला। दूसरा है कि नासा इसरो प्रिपेयर जॉइंट स्पेस मिशन, बेसिकली निसार जो है, इट इज अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार दैट इज टू बी लॉन्च्ड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। और इसमें इसरो और भेजेंगे GSLV-Mk2। और नासा का अपना रहेगा एक रडार रहेगा, सिंथेटिक रडार सिस्टम रहेगा, जिसमें से इट कैन रिवील द डायनेमिक्स ऑफ कार्बन स्टोरेज अपटेक वुडेड एग्रीकल्चर वेटलैंड। ये एग्जामिन कर सकते हैं ऊपर से, मतलब ठीक। कि अर्थ को कौशिक, ओवरऑल। इसमें जो तो रडार रहेगा। सिंथेटिक, हाँ, सिंथेटिक अपर्चर रडार जो होता है उसका एडवांटेज क्या होता है? कि ज्यादा कर सकते हैं, बस यही है अभी तक फिलहाल, ये कि आप मतलब वो, ज्यादा हाँ, हर स्पेसिफिक टाइम। जीपीएस से ज्यादा अच्छा रहता है। एक एक एग्जाम्पल, और एक और चीज, कैपेबिलिटीज मोर इनका, ऑल वेदर कंडीशन, हर वेदर ऑल कंडीशन वेदर कर सकता है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है उसको। यस। ठीक है। और ये हो गया। अब लास्ट ये रहते हैं लेपर्ड जो एक्सटिंक्ट हुआ था ताइवान से, फॉर्मोसा क्लाउडेड लेपर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। टाइगर बिलीव टू हैव गॉन एक्सटिंक्ट फ्रॉम द सुंडा आइलैंड, तो बाली टाइगर। हम्म। और फिर एक्सटिंक्शन का नाम दिया हुआ है कि और ठीक। इम्पोर्टेंट। ओके, वी हैव टेकन अप दिस वन एंड Becca, we have taken this one, and now we are concluding. So first of all, in the Hindu newspaper, we discussed the importance of the George and how it is formed in the early part of the denudation process by the rivers. And there are several types of Georges we have seen in the Himalayan region also, and also in the Narmada Valley. Then PBTG.
what are the PBTG, 75 PBTGs are there in India, and how in government is doing a lot for the social welfare mechanism for the PBTG. 24,000 crore have been allocated for them. Then regarding the women's safety, we have discussed how women's safety Haryana government is doing. For example, uh, Shakti Kendra Mahila Shakti forces, and they are encouraging the awareness among the people in the Khaf Panchayat for the adoption of the girl child and reducing the chances of the female feticide. They are giving loans at affordable rate to the SSG, etc. तो overall ये women के लिए होगा. Then regarding the CCPA action on the coaching industry, right now the coaching industry is targeted to reach around 1.7 lakh crore in 5 to 6 years, and the case was that coaching industry was promoting the toppers which they have not studied even a single classes. So CCPA is basically a consumer protection authority, and it is under the Consumer Protection Act 2019, and they are acting against the unethical practice that is being followed by the coaching institution and its ecosystem for buying of the topper and uh, colluding with them. Then regarding the creativity of the Koi code, UNESCO has designated it, and then we discussed about the Naga self rule, how they have given ultimatum to the state center, and we discussed that the carrot and stick approach can be used to make the people of the Nagas acceptable to the local population, and at the same time we can use armed forces and also the Assam Rifle to deal with the extremist element. Then regarding the FATF review, we talked about they how major countries are under the blacklist, such as North Korea, Sudan, and Iran. And secondly, some countries are put in the gray list for over monitoring of them. For example, Pakistan, and some month UAE will also put into them. First of all, FATF also does a review yearly. It can be by an annual or it can be once in a 2 year. Asia Pacific Group does a review of India, and India is preparing itself for that, for tackling its own money laundering issues, then banking reform, etc. Now, Mansi, you can conclude what we Okay. have discussed in Indian Express and Finance Express. Okay, so we firstly talked about South China Sea, what is basically the concerns around this. So we are seeing South China Sea में 9-line. China has been violating the sovereign rights of the countries in the South China Sea region, and their basically rights to exclusive economic zones are getting violated there. So it is trying to assert itself. Then we talked about that Supreme Court has basically issued that regarding like before the formation of draft national menstrual hygiene policy, we need to ensure कि schools में the toilets for specifically girls should be in proportion to their population, and sanitary napkins would also be provided under this hygiene policy, and we need to also ensure कि they are biodegradable in nature at the same time. Apart from this, we discussed about OTT regulation, like whether can CBFC should be given the powers or not. So right now, the regulation is self-regulated bodies, and the content which can basically the obscene content has been prohibited, which was pornographic in nature, which also violates the safety of children also. That was under IT Act 2000, and then there is also indictment representation, the Women Prohibition Act was also there. So this was under this. Then we discussed about broadcasting bill. That is also a draft bill right now in this draft stages. So conflict of interest is one of the main concerns around this. And we also discussed in the context of the regulation of the cable TV networks also. So modern context may how changes and reforms are also being discussed around the cable TV networks, like we're having smart TVs and their regulation, technological interferences, how that is basically reshaping this entire cable TV network audience. So that is important. Then we discussed about the different types of cheese varieties like chirpy, which is found in Himalayan region. Then Kalari is found in Jammu and Kashmir. So they can help us in basically export income.
then we need to look for GI tagged cheese varieties from India, and they can be helpful again to tackle nutritional security. Apart from this, we talked about Indo-Pacific Economic Framework, which is there, which is IPEF, and we have like agreed upon the strengthening of the resilience of the supply chain, where we can ensure reduced dependence upon China. And India has just not joined the trade pillar. Rest we have, like, we are a part of it. So trade context may India always have concerns ki what would be the impact upon the domestic industries. So that is why we have not joined the trade pillar. And in terms of climate change also, we talked about there is moral imperative also associated with the actions that we are taking to mitigate and adapt to the climate change, because that would be again impacting, if we are not acting accordingly, it would be impacting the lives of children also, the future generation also. So selfless attitude is very important. Then in the context of the quotation that we discussed was sharp knife and sharp cheese. So that was interpreted key. It need not be like basic needs versus the greeds. We need to be happy in what we have. If our basic needs are being getting fulfilled, we are like capacity generation ki humne baat kari thi, importance of skills. Then resource distribution can be one of the interpretations. Food security ke context mein this can help us. Then we also talked about APEC. APEC is the Asia Pacific Economic Cooperation. So it was established in 1989, and Seoul Declaration is associated with it. India is right now not a member of it, and it is focusing upon a free trade, low tariffs, and liberalization of trade. So this is kind of a regional economic cooperation which is there. So, and also one important topic was regarding alcohol. We discussed we always talk about from the perspective of road safety, or uh, basically we are not talking this in the context of the health and the diseases, or even the Western culture which is associated with it. We are seeing specifically kind of a peer pressure also, how youth is also getting into this trap. Food strategies, we also talked about. WHO limits is also there. India also implemented that 10% reduction. So this is there, and as a part of like additional source of revenue generation government ke liye, this is one of the largest revenue sources. So that's there. And even abuse associated with drunken driving, and then the even how it is a concern for even road safety also. So this is there. And off late abhi humne discuss kiya science page pe about the Amal के राय चौधरी's ideas, gender relativity की उन्होंने बात करी कि nothing is constant. So this was there. निसार की हमने end में बात करी कि synthetic aperture radar basically कोई obstruction नहीं होता, so that helps in even during bad weather like conditions. So these were all the topics that we discussed today. So thank you so much for joining Ansarkari. You can subscribe to the channel and stay tuned with us for everyday updates and discussions.